our innovative therapy. वैज्ञानिक सचिव, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर परविंदर मैनी जी का और निदेशक विज्ञान प्रसार भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी का, साथ ही उपस्थित वैज्ञानिक व अधिकारीगण, देश के अलग अलग क्षेत्रों में विशेष रूप से 75 स्थानों पर हमसे जुड़े हुए सभी गणमान्य अभ्यागतों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब हम माननीय मंत्रीगण से निवेदन करेंगे, कृपया दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। साथ ही हम निवेदन कर रहे हैं मंचासीन अन्य मान्यगणों से, कृपया वो भी इस कार्य में सहभागी हों। आप सभी मान्यगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। समूचा राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के संकल्प के साथ युवाओं और आम जनमानस को जोड़ने के लिए 22 से 28 फरवरी 2022 तक विज्ञान के प्रसार का महोत्सव विज्ञान सर्वत्र पूज्यते देश में 75 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इस पर और प्रकाश डालने के लिए हम अनुरोध करेंगे वैज्ञानिक सचिव, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर परविंदर मैनी जी से। मैम प्लीज।
Honorable Union Minister of Culture, Shri Kishan Reddy ji, Honorable Minister, Union Minister of State, Independent Charge, Science and Technology, Minister of State, Independent Charge, Earth Sciences, Minister of State, PMO, Personal, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh ji, Dr. Vijay Raghavan, Principal Scientific Advisor to Government of India, Dr. Chandrasekhar, Secretary DST, Dr. Nakul Prashar, Director Vigyan Prasar. Namaskar and good afternoon to you all. Science is a desire to know the unknown, accompanied with experimentation and observations, have always generated scientific temperament. India has a rich heritage of science and technology, whether it is in the field of astronomy, mathematics, medicine, metallurgy, or geography. Science has been the foundation of India. India's growth, and it needs to be remembered, it needs to be admired, it needs to be celebrated. It is for this reason that Ministry of Culture, along with the Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India, with the active support of all scientific ministries, namely Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, Council of Scientific and Industrial Research, Ministry of Earth Sciences, Department of Atomic Energy, Department of Space, Indian Council of Medical Research, All India Council for Technical Education, Defense Research Development Organization, and various state S&T agencies have joined hands to commemorate the Vigyan Sarvatra Pujyate, which means universal reverence for science. The entire event is being organized by Vigyan Prasar, an autonomous organization under DST. This event is part of the celebrations of Azadi Ka Amrit Mahotsav, an initiative of the Government of India to celebrate and showcase 75 years of India's independence, its progress, the glorious history of its people, culture, and achievements. The event is being held from February 22nd to 28th, simultaneously in 75 locations across the length and breadth of the country. We acknowledge that science and technology are key drivers to development as technological and scientific revolutions underpin economic advances. Science and technology alters the way people live, connect, and communicate and transact. The week-long program has been designed to inspire India's youth and stimulate their scientific temperament, leading to a strong nation. It is important that the youth is made aware of the various scientific interventions made by Indian scientists, which has won us acclaims across the world. By showcasing the biographies and their contributions, will imbibe and reinforce the commitment of the scientific community towards service to mankind, leading to socio-economic development of the country. The event will also highlight the work done by various R&D organizations across the country. What is the envisaged R&D roadmap 2047 when we complete 100 years of India's independence? The program has been grouped into four themes. The first theme, which is from the annals of the history of S&T. Here, the contributions of various Indian scientists of national importance to nation building will be discussed. 75 films on 75 scientists and 75 lectures by eminent scientists and technocrats across 75 locations will be delivered. The second theme, milestones of modern S&T, will highlight critical discoveries, innovations or interventions that made a mark in the global arena. The third theme, Swadeshi Paramparika inventions will showcase 75 inventions or technologies that made India self-reliant. The fourth theme, transforming India, will include talks by 75 scientists and technocrats from within India and the Indian diaspora on the science and technology vision during the next 25 years. A mega expo and a book fair is also planned to be held at the Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi as part of the celebrations.
The Science Literature Festival, to be organized simultaneously at all 75 locations, aims to communicate science through theatre, poems, culture events, including a puppet show and shadow play, and will bring together science writers, communicators, artists, poets, dramatists, and street play artists. Besides this, several competitions, including quiz programs, essay, poster, and poetry contests, will be held to ignite our young minds. The program will be held in 15 Indian languages. Vigyan Sarvatra Pujyate will culminate on 28th February, which is celebrated as the National Science Day, in remembrance of the Nobel laureate C.V. Raman's path-breaking discovery of the Raman effect in 1930. The theme for this year's National Science Day is Integrated Approach in S&T for Sustainable Future. Thus, this theme is being implemented in letter and spirit through this week's long celebration of Vigyan Sarvatra Pujyate, where all science ministries, along with state S&T agencies at 75 locations, are coming together to celebrate this event. As we speak, this program is being live-streamed from across 75 locations in the country. Let us all therefore rise to this occasion and celebrate India's scientific glory for the past 75 years and lead India through a revolutionary journey to be one of the most among the best nations in science and technology innovations, thereby adding to the economy of the country. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, respected Dr. Parvinder Meniji, for sharing the information and addressing the August gathering. And now for the address, may I request Secretary, Department of Science and Technology, Government of India, respected Dr. S. Chandrasekharji, sir. Greetings to all of you. Respected Union Minister of Culture, Sri Kishan Reddy Garu, respected Union Minister of Science and Technology, our beloved Dr. Jitendra Singh Ji, Dr. Vijay Raghavan, Pravinder Maini, Nakul Parashar, my fellow secretaries in the audience, greetings to all of you. We are very privileged to have two important ministers addressing all of us today. We are creating also history by organizing this science festival at 75 locations across the nation at one go in a uniform way. And all of them are live streaming to see us. What more can we have than showcasing the glorious past of India's science, but also debate on what we are doing and also think of the future. We have lined up many expositions, lectures, films, posters, and many other activities going on parallelly. All this has been possible thanks to all the ministries, all the departments who have worked relentlessly for the last 2 weeks to make this event happen. The mega event, Vigyan Sarvatra Pujyate, is being organized to celebrate our own festival. We are all practicing researchers, scientists, but we also want to make sure that the young minds get inspired looking at the way India has progressed with the pillars built on science and technology. The Vigyan Sarvatra Pujyate will popularize science and technology at the grassroots level also. We are conducting several competitions to inspire young minds. Just to recap, DRDO is really taking a lead in doing exhibitions at 18 places of their own contributions. ISRO is running a bus. Scientists and science units are excited with remote places built on science like Kavaratti, Leh, Ladakh to be part of this great national festival. Our DST is also putting up an exhibition tracing the history of mathematics in India. We are proud that India has made great contributions in this important mathematical sciences. I'm also told by our organizers that many educational institutions, including government, private sectors, are participating in this event very, very excitingly. It is our S&T minister's desire to see that all the departments under science and technology to work together as one team. Each of us specialize and excel, which we would continue to do.
We assure Honorable Minister that all our ministries continue to make sure that 1 + 1 is not just 2 or 3, but it is 11. The Vigyan Sarvatra Pujyate will showcase the scientific legacy and technology prowess that have helped find solutions to problems in defense, space, health, agriculture, and many other fields. Our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has always motivated us to nurture scientific temper and take science in mother tongue to people. Today, we had the great fortune of having our Honorable Vice President Venkaiah Naidu ji addressing all of us just a few hours ago. I'm happy to note that Vigyan Prasar has commenced an ambitious program, Project Vigyan Bhasha, to communicate science in various Indian languages, including Sanskrit. They have begun work in Urdu, Kashmiri, Punjabi, Marathi, Kannada, Tamil, Telugu, Bengali, Nepali, and Assamese. We add more languages as time progresses. We want to inspire the youth in this country with the good work and world-class research that is taking place in our scientific organizations and universities. During these corona times, we are all aware how Indian science has responded and made sure that India comes out of this pandemic with minimal damages. Our labs and scientists delivered world-class products and services even during the pandemic, and yet again prepared to face any eventuality in the future. We are all geared up to prepare for the future activities. The event for sure will not only portray the past scientific legacy, but will also set a stage for boosting the morale of our scientific fraternity. The Science Festival is a way out to inculcate the desired scientific temper in the society. Think scientifically, act scientifically. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, respected Dr. S. Chandrasekhar ji, for your valuable inputs. And I would now request Principal Scientific Advisor, Government of India, respected Dr. K. Vijayaraghavan ji, to kindly address the August gathering. Sir. Honorable Minister of Tourism, Culture and Development of Northeastern Region, Government of India, Shri G. Kishan Reddy Garu. Honorable Minister of State for Science and Technology, Independent Charge, Minister of State for Earth Sciences, and in the Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh ji. My colleagues, Dr. Chandrasekhar, Dr. Parvinder Maini, Dr. Nakul Parashar, and all the other colleagues in the audience. Ladies and gentlemen, it's a great honor to be here today at this important function of inaugurating the Vigyan Sarvatra Pujyate program. जैसे आपने सुना डॉक्टर परविंदर मैनी से और डॉक्टर चंद्रशेखर से, वो पूरा प्रोग्राम्स की डिटेल आपके पास है कि कैसे सारी देश में सारी थीम पे हमारे 75 साल के विज्ञान से क्या क्या हमें मिले हैं, क्या हो रहा है, उसके बारे में फंक्शंस शुरू होंगे और 28 फरवरी को कल्मिनेट करेंगे। मैं ज़रा ब्रीफली बता दूंगा कि कैसे हम यहाँ आए और आगे 2047 तक कैसे, कहाँ, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। शायद pre-independence India saw the successes of great individual scientists who contributed in a world where scientific institutions were sparse. So you had great scientists such as Meghnad Saha, Janaki Ammal, Ramanujan, C.V. Raman, Bose, Satyan Bose, J.C. Bose, etc., who made extraordinary contributions. But that was a world, both in India and abroad, before the institutionalization of scale of science. Post-independence India saw, both in India and all over the world, science becoming a major institution. And in India, this saw the rise of our major institutions such as the Council of Scientific and Industrial Research, which was founded a little earlier, the Department of Atomic Energy, later on the Department of Science and Technology, the Department of Defense Research, and so on. These great institutions truly transformed the development of science and technologies for India, and they did so by interacting with the university system in a manner where the best students came to these institutions and extraordinary work was done both in fundamental research as well as in applications, and these had major impact, and those iconic ones you well know of,
successes in the Department of Space, for example, and the Department of Atomic Energy, in agricultural research and health research, and so on. The post-independence period also saw extraordinary individual scientists. It's not that they were not there. Govind Swarup built radio telescopes in India, which were absolutely world-class and did world-class research. We had Dr. Panchanan Maheshwari at Delhi University, who opened up the field of plant research in new ways. Dr. G.N. Ramachandran at Bangalore. Dr. Shipra Goa Mukherjee also contributed to plant research in new ways, as well as Anna Mani in meteorology. So this combination of great institutional building allowed these scientists and the teams to contribute to research in India. But there was one feature of this growth of early post-independence research, which now bears correction and is being corrected. And that is the role of research in the university system. For a variety of reasons, both internal to the university system and external, that is these institutions like the CSIR and the Department of Atomic Energy and so on, which I've referred to, the university system became a feeder to the research institutions, but less and less research was done in the university system. Now, this is not the way which has happened in the rest of the world. The rest of the world, research institutions and university systems are intimately connected. What has happened in the last few years is a major step in the correction of this balance, and that is the new national education policy. And that aims not only to bring research and teaching together across our system, but it also aims to ensure that research of the highest quality is done in our university system, our central universities, our state universities, our colleges, and these great research institutions are interlinked with them in a hub and spoke model where they are sort of like the field stations of research of all of the people. This intertwining is very, very important as we go ahead, and as it happens even now, it is able to address the major problems in our society, in India, and really the major problems all over the world. Now, the situation is that which the pandemic has taught us is research ideas and problems are defined by a grounding in our ecosystem, and they're tackled at the high-tech level or at various other kinds of levels by a partnership between research institutions, universities, and industry. This industrial partnership has also grown extraordinarily over the last few years in our startup ecosystem and the partnership between industry and academia in multiple other areas. So going forward, what do we do? If you look at 2047, it is clear that there are extraordinary challenges which the world faces and which India is in a very strong position to help solve because of our very talented young people. So if we can take our research ecosystem to these broad areas which I talked about, we will be playing a major role, not only addressing the challenges which India faces, but the whole world faces. Going forward for the next 25 years, very simply, there are major issues which we know are there to be addressed, and these relate to agriculture, health, climate change, biodiversity, environment, manufacturing, computers, supercomputing, quantum missions, and so on. So these are what one would call the known problems which we need to address. And major missions have been launched, major partnerships with industry and academia, which will drive this known knowns. So this is a thrust which is already there and which will go forward. There are also other kinds of challenges which we are addressing today, and they are what one would call the known unknowns. The exploration of the deep ocean we know that there are new science, new avenues of findings, new technologies which would be needed to explore the deep ocean. So this is a known unknown, and the deep ocean mission which the Mantriji has launched under the aegis of the Ministry of Earth Sciences will explore such known unknowns, just as we would explore space and continue to do so. So these are the known unknowns. There are also other areas which are very complicated, which are known. We know that they are complicated, but we are unable to address right now.
How does the brain, for example, which is a collection of billions of neurons and trillions of connections, how does it process information to result in action? That is unknown right now, and we know that it's an unknown. There are many areas of complex mathematics, also such as in fluid mechanics, where we know that we have important problems to solve, but we're yet unable to find the tools to solve it. So there's a great scope here for young minds to be innovative and attack these new areas of knowledge in a manner where new tools come to bear so that we can solve them. Finally, there are problems which we don't know that they exist, and we don't know what those problems are. How can we ever be prepared for something which are unknown unknowns? How can we be prepared for something which we don't know exists? The only way we can do that is by widespread training and education of our youth, so that when something unusual and strange and something which you're unprepared for comes, these people have the intellectual tools to tackle them. So this requires fundamental training in our own languages, in science, logic, reasoning, and this should go to our school levels and our college level. And that, again, to come back to where I started, is a major thrust of the national education policy. Many things which we have done, we should be proud of. We are prepared very well going forward to what we need to do, and we're sure that with this enthusiasm and and this ability to work together, if we do that well, we will be able to tackle anything for the next 25 years. Thank you very much. Thank you, sir, for enlightening us with your views and thoughts. Respected Dr. K. Vijayaraghavan ji, Principal Scientific Advisor, Government of India. भाषाओं की जब बात होती है तो हर भाषा के विषय में हम कह सकते हैं कि उसका अपना विज्ञान होता है, अपना महत्व होता है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो अपने आप में वैज्ञानिक भाषा है, और इसीलिए हमारे इस महोत्सव का शीर्षक हमने दिया है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। और अब हम माननीय मंत्रीगण से अनुरोध करेंगे, कृपया विज्ञान के प्रसार के महोत्सव विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का डिजिटली शुभारंभ करने की कृपा करें। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्रीगण। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय वैज्ञानिक संस्थाएं एवं विभाग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संयुक्त रूप से एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का शुभारंभ 22 फरवरी को किया जा रहा है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम भारत की वैज्ञानिक विरासत, प्रौद्योगिकी, कौशल को प्रदर्शित करने के साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अभिनव समाधान खोजने की दिशा में एक प्रयास है। विज्ञान के इस महाआयोजन का समन्वय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार द्वारा किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्षों की वैज्ञानिक यात्रा को यादगार बनाने और भविष्य के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का यह प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी भारत सरकार की दूरदर्शी सोच को बल दे रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में हमें मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। कटिंग एज इनोवेशंस के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए 22 से 28 फरवरी तक चलने वाले विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत 75 स्थानों पर एक साथ
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में एक मेगा एक्सपो और पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। अट्ठाईस फरवरी को इस विज्ञान सप्ताह का समापन समारोह विज्ञान भवन में आयोजित होगा। कार्यक्रम की जानकारी www.vigyanpujyate.in पर उपलब्ध है। विज्ञान के इस महाआयोजन में शामिल होकर आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में भागीदार बन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित होने के इस अवसर का लाभ उठाएं और विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम से जुड़ें। काम के लिए हेल्प की। तो आपने इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से जाना कि इस पूरे सप्ताह भर में क्या क्या गतिविधियां देश भर में रहने वाली हैं। और चूंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, तो 75 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में भी आपने जाना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेगा एक्सपो की शुरुआत हो रही है और साथ ही साहित्यिक दृष्टि से भी और फिल्म की स्क्रीनिंग के माध्यम से भी युवाओं और आम जनमानस को विज्ञान के महत्व और आने वाले समय में इसकी भूमिका से अवगत कराया जाएगा। और अब हम माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सादर निवेदन करेंगे। कृपया आज के इस शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचनों से सर आप हमें कृतार्थ करें। Honorable Minister for Tourism, Culture and Development of North-Eastern Region and our very dear friend, respected श्री कृष्ण रेड्डी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी। उनके साथ बैठे हुए डॉक्टर राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, श्री गोविंद मोहन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, Dr. S. Chandrasekhar, Secretary Department of Science and Technology, Parvinder Maini, Scientific Secretary in the Office of Principal Scientific Advisor, Nukul Prashar, Director विज्ञान प्रसार। सबसे पहले तो आप सबका बड़ा बड़ा अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम, जैसा आपको बताया गया, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके पीछे का भाव क्या है, कल्पना क्या है, उसे समझना अनिवार्य है, क्योंकि हम विज्ञान की भी बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। तो आज किस बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो कहाँ आकर के संस्कृति और विज्ञान जुड़ जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि वेयर रिलीजन एंड साइंस बिगिंस, वेयर साइंस एंड द रिलीजन बिगिंस, एंड व्हेन बोथ जॉइन इट इज द कल्चर। सो इट्स अ साइंटिफिक कल्चर एंड द कल्चरल साइंस all into one that we are witnessing this afternoon. And I think the sense of the program is that there has been a tremendous scientific achievement in the recent past, but how best to incorporate it in our cultural ethos. कि जो हाल ही के समय में जो हमारी अनेकों उपलब्धियां हुई हैं विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उनको किस तरह से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ करके उसका आंकलन भी कर सकते हैं और उसी से अपने आगे की राह, अपना रोड मैप भी तय कर सकते हैं। जो जो हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछा छोड़ दें पीछे का, तो शायद उससे भी हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होता है। बिकॉज जैसे चर्चिल सेड, द लॉन्गर वी लुक बैक द फर्दर वी लुक फॉरवर्ड। तो आगे देखने की क्षमता और दूरअंदेशी भी उतनी बढ़ जाती है जितनी हम में ये क्षमता रहती है, या इतनी तवज्जो रहती है कि हम अपना बीता हुआ समय, बीते हुए संस्कार को साथ लेकर के चले। सो हाउ बेस्ट टू कंबाइन द इंडियन ट्रेडिशन with the Indian scientific advancement. I think that should have been the crux of the theme of observing this afternoon's program. And second, of course, as all of us have been reiterating day in and day out, the ultimate goal of any
innovation is to bring in ease of living in the life of a common citizen. तो वो सारा नवाचार, वो सारा शोध, वो सारा विज्ञान कहीं ना कहीं अपने पर्याप्त लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है यदि वो आम नागरिक के जीवन में सरलता ना ला सके। लेकिन आम आदमी के जीवन में सरलता लाने का अर्थ मात्र शारीरिक सरलता तक नहीं सीमित रह जाता, उसके लिए संस्कार अनिवार्य हैं। और फिर बात आ जाती है संस्कृति की। So the entire well-being and the entire wholesome well-being, because being a doctor, we were always taught what is the definition of health. And the definition of health was said to be not the absence of disease, but a sense of well-being. And what is well-being? Well-being is not limited only to the physical well-being, which might be there with the modern tools which facilitate our physical working, but also in the entire well-being, which includes the mental well-being and the physical well-being. And therein comes in the healthy, the optimum synergism of our Asian cultural ethos with the modern scientific achievements. उस मिश्रण का उत्सव मनाने के लिए हम आज खड़े हैं। और इसको नाम मैं समझता हूँ उत्सव का इसलिए दिया गया होगा जिन्होंने इसकी कल्पना की कि यदि हम पिछले 75 वर्ष नज़र दौड़ाएं तो आपको ध्यान में आएगा कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज किसी भी क्षेत्र को देखिए, अभी डॉक्टर राघवन अंतरिक्ष की बात कर रहे थे। जब हमने अपनी अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की तो रूस पहले ही अंतरिक्ष में अपना एक व्यक्ति पहुंचा चुका था 60 के दशक में, और 60 का दशक खत्म होते होते अमेरिका का एक व्यक्ति चंद्रमा की धरती पर पैर रख चुका था, नील आर्मस्ट्रांग, एंड वी वर स्टिल सिंगिंग नर्सरी राइम्स चंदा मामा दूर के। आज हमारा मंगलयान रिकॉर्ड तोड़ समय तक ऊपर रह करके चित्र उपलब्ध करवा रहा है नासा को। सो इट्स बीन अ मिराकुलस जर्नी। And ladies and gentlemen, what is important with this theme to think is that this journey has been possible not only because of our scientific feat or scientific capacities, but also because of the cultural strength, the civilizational strength which was behind it, which enabled us to sustain it, which enabled us to make such rapid strides. क्योंकि हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में था कि हमने जो बीता हुआ समय है उसकी पूर्ति करके देश के अन्य देशों के साथ खड़े होकर के प्रथम कतार में आना है। एक ज़माना था हमारे संस्थानों के लिए वैज्ञानिकों की खोज करने विदेश जाना पड़ता था। आज ट्विटर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, गूगल देखिए, हमारे वैज्ञानिक, भारतीय मूल के वैज्ञानिक उसके मुखिया हैं। एंड दैट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज वी हैव गिफ्टेड द वर्ल्ड विद साइंटिस्ट्स who carried not only the scientific capacity which their peers even in the West had, but they had the value addition of the cultural heritage which the Western counterparts didn't have. So that's what makes us different, makes our scientists different. और आज चूँकि लंबी बात नहीं करनी है, चूँकि आज जबकि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी प्रवेश कर चुकी है और जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली और जिस प्रकार का प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया गया है विज्ञान को, नवाचार को, टेक्नोलॉजी इज नाउ बेसिस ऑफ प्रोग्रेस एंड वर्क इन practically every sector, not only in the government but also in our lives. Technology has entered every Indian household. And therefore, how best to achieve its optimum outcomes? So optimum utilization of the new modern scientific tools makes it important for us to have the safeguards dictated, guided by our cultural ethos. So that even when a youngster is unguided, he knows what is the tool meant for and what not meant for. और वही अगर वो करेंगे हम तो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ सकते हैं, because then we will be channelizing our capacities to the most constructive outcomes rather than utilizing them for options which may not be healthy to us. और इसलिए यही कारण है कि विज्ञान आज ना केवल जैसे मैंने कहा जीवन में सरलता लाने के लिए, बल्कि जीवन में
आने वाली चुनौतियां भले ही वो अकस्मात क्यों ना आ जाए, उनका सामना करना और उनको पराजित करने के लिए भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र बन के सामने आया है। बड़ी कठिन बात नहीं कह रहा मैं, उदाहरण है आपके सामने कोविड का। किसी ने कल्पना नहीं की थी ऐसे मुंह बांध करके हम सारे बैठे होंगे। ये दृश्य अगर इस तरह का चित्र अगर आज 3 साल पहले आया होता तो एक अच्छा कार्टून बन जाता हम सबका। लेकिन हमने सीख लिया ये, और हमने सीखा इसलिए, and now I am coming to the next important point, which is again related to our culture also, because we developed a mindset. मोदी जी ने कहा लॉकडाउन करिए, हमने लॉकडाउन किया। मोदी जी ने कहा मुंह पे मास्क रखिए, तब समझ नहीं आया हमें कि क्यों रखना है, लेकिन हमने रखा कि किसी बड़े ने कहा है, सोच के कहा है, जो कहते हैं कुछ हमारे हित में कहते हैं। आज हमें महसूस हो रहा है कि इसका हमें क्या लाभ हुआ। 135 करोड़ का देश बच गया। हमें साइंस में भी नहीं सिखाया गया था कोविड क्या है, लेकिन हमें संस्कार ने ये सिखाया था कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हमें कोई सीख दे रहा है तो उसका कोई ना कोई महत्व होगा। The scientific outcome was realized later, but because of the cultural ethos, we became part of that scientific exercise. So that is the mission of Sanskriti and science. और इसलिए जैसे बताया गया, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते 75 साल के मनाने के अवसर पर 75 शहरों में 75 संस्थानों में इसका आयोजन किया जा रहा है। एंड आई वुड जस्ट again end by saying that science and technology share an integral relationship, rather a reciprocal relationship. So science cannot be of optimal utility without cultural ethos. And cultural ethos will not lead you up the ladder of success without scientific capacities. Now it's up to us how best to make use of this double instrument available to us. But before that, we have to realize that it is actually available to us. For that, we need to have the right kind of mindset. And I'm sure 28 तारीख तक हम मात्र इन आयोजनों में इसलिए भाग नहीं लेंगे कि सरकार की ओर से ऐसे निर्देश आया है या कल्चर मंत्रालय की अपेक्षा है, बल्कि इसलिए भी कि इट विल बी एन एक्सरसाइज फॉर अस। ये हमारे लिए एक अभ्यास वर्ग रहेगा 1 सप्ताह का, ताकि 28 तारीख को हम जब मिलें दोबारा तो हम समझ सकें कि हमें इससे क्या लाभ हुआ है। सो इट्स इंडीड अ पीरियड ऑफ ग्रेट इंट्रोस्पेक्शन एट 2 levels टू ब्रिंग अस टू अ सिनर्जाइज्ड सिंगल लेवल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। और निश्चित ही हम आशा करते हैं कि आपने युवाओं का जो मार्गदर्शन किया है कि किस प्रकार से अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादाएं हमें तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ स्वयं समझनी है, आशा करते हैं कि हम सभी इस ओर ध्यान देंगे। और अब हम विनम्र निवेदन करेंगे माननीय केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी सर से कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। सर। Respected my senior colleague, Minister of Government of India, मेरे बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, who handles multiple ministries related to Vigyan, including science and technology, earth sciences, atomic energy and space, and Minister of Prime Minister Office, Principal Scientific Advisor, Government of India, respected Dr. K. Vijayaraghavan Garu, Secretary, Minister of Culture, Government of India, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India, Dr. S. Chandrasekhar Garu, Scientific Secretary, Office of PSA, Dr. Parvinder Menji, Director Vigyan Prasar, Dr. Nakul Prasad, members from the scientific research community, friends from media,
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड एल्डर्स, सबको नमस्कार। विज्ञान सर्वसदा पूज्यते। जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की ओर से भारत और दुनिया की सभी वैज्ञानिकों को अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि भारत और दुनिया के कोरोना जैसे महामारी को हराने के लिए श्रेय हमारे सभी दुनिया के वैज्ञानिकों को जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन देकर संपूर्ण मानवता पर एक उपकार किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने ना दिन देखा ना रात देखी है, सिर्फ इस महामारी से दुनिया को बचाने के लिए एक कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, डिटरमिनेशन के साथ काम किया है। और मित्रों, इतना ही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों अपने प्राणों को भी चिंता ना करते हुए वैक्सीन बनाया है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रकृति और संस्कृति सिर्फ स्वयं की भलाई के लिए नहीं है। भारतीय जीवन एक साइंस से जुड़ा हुआ है। हम भारतवासी हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, अधर्म के नाश हो बोलने वाले हैं, प्राणियों को सद्भावना हो सोच रखने वाले हैं और विश्व के कल्याण हो प्रार्थना करने वाली है। हम भारत के जनता है, इस भाव से जीने वाले लोग हैं हम। इसलिए हमने 150 से अधिक देशों को वैक्सीन देने का काम हम शुरू किया है। और साथ ही भारत ने 175 करोड़ से अधिक टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। दिस इज ए बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द एंटायर वर्ल्ड। इसके लिए आप सभी बधाई के प्राप्त है। एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज ऑलवेज हैड a symbiotic relationship with science and technology. Spirituality and science went hand in hand. दुनिया से सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, दुनिया से सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, दुनिया से सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन कंट्री है। इंडिया टुडे इज ए नेशन ऑफ यंग and confident citizens. Young members of the Indian science community today possess a unique mix of a scientific temper that challenges and questions, a childlike curiosity to see what's behind the bend. I can do spirit to use the limited resources prudently and a quest to make difference globally. मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसकी भाव के साथ 150 से अधिक देशों को वैक्सीन सप्लाई करने का, एक्सपोर्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी सरकार की भारत की उदारवादी का सोच बताते हैं। फ्रेंड्स, न्यू इंडिया विल नॉट रेस्ट इन द ग्रेटनेस ऑफ आवर पास्ट। दिस न्यू इंडिया हैज द एबिलिटी टू मोल्ड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एन आर्यभट्टा वी इन्वेंटेड zero and pi. Our future will see scholars and scientists breaking barriers in space, travel, and explorations.
This is even more important today as the government of India is commemorating 75 of Indian independence celebrations as a आजाद का अमृत महोत्सव। भाइयों और बहनों, आजाद के 75 वर्ष का देश की आजाद अमृत महोत्सव का मना रहे हैं। आने वाले 25 इयर्स 2047 तक अमृत काल है हमारे लिए, हमारे भविष्य के पीढ़ी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए एक अमृत काल है। उसके बाद 2047 के बाद ये यूथ नहीं रहेगा, यूथ पॉपुलेशन कम होगा। नाउ वी आर द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। आफ्टर 2047 ये सिचुएशन नहीं होगा। इसीलिए हमारे लिए, हमारा भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश को शक्तिशाली बनाने के लिए ये 25 साल अमृत काल है। इसी दृष्टि से हमारे नौजवान को आगे बढ़ाना चाहिए, नया रास्ता बताना चाहिए। देश को आगे ले जाने के लिए, देश में गरीबी, देश में बेरोजगार, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के जनता की और सुधार होने के लिए और दुनिया के देश के साथ एक विश्व गुरु बनाने के लिए ये 25 ईयर आने वाले एक अमृत काल होगा। इस सोच के साथ हम पूरा मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। देश की आजाद से पहले और देश की आजाद के बाद वैज्ञानिकों का योगदान तुलना नहीं कर सकते हैं, बहुत अमूल्य है। इंडिया इज प्राउड टू हैव प्रोड्यूस्ड एमिनेंट नोबेल laureates and contributors like Sri C.V. Raman ji, Hargovind Khurana ji, Meghanath Saha ji, Subramanian Chandrasekhar ji, Venkatraman Ramakrishna ji, our great, our son of land, APJ Abdul Kalam ji. The contributions of Homi Baba, Vikram Sarabhai have only made इंडिया स्ट्रांगर। स्वतंत्र भारत की 75 साल की लंबी वैज्ञानिक यात्रा का उत्सव मनाने का इस प्रयास से भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का बढ़ावा मिलने का, साथ ही भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण प्रदर्शित होगा। मित्रों, युवाओं में बचपन से ही विज्ञान का सोच का बढ़ावा देना हमारे लिए, देश के लिए जरूरी है। आज कहने में बहुत खुशी हुई कि 35 इयर्स के बाद भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है और इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल पर विशेष ध्यान इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया। आज के स्टूडेंट्स जिज्ञासाओं का शांत करना भी जरूरी है। उन्हें ही नई आविष्कारों के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ साइंस एंड इनकलकेट ए साइंटिफिक टेम्पर among the students, youth and entrepreneurs, the Ministry of Culture administers 25 science museums centers running in the country, and we developed more than 25 science museums and hand over to the state governments. Another 18 more developing new museums. मित्रों, यहाँ पहले साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के विकास के अगले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। Our promotion of science and technology is incomplete until the benefits and access reach everyone. The applications of our research should therefore benefit the poorest of the poor, and this should be our yardstick.
Friends, therefore, it is important that we celebrate some recent success for India in the field of science and technology. India's race to the 46th position, featuring within the top innovative economies globally as per the Global Innovation Index. We are among the top 3 countries in a scientific publications as per the National Science Foundation NSF database. We have reached third position in the terms of number of PhDs, size of higher education system. आजाद की इस 75 साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न है, 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स है, और कृषि की बात है इसमें से 10,000 केवल 6 महीने में हम प्रारंभ हुआ है। मित्रों, आज दुनिया दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब आज भारत उभर के आए हैं। DRDO टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल ballistic missile Agni-P with a range of capability of 1,000 to 2,000 kilometers. India has also an anti-drone technology to detect and neutralize unmanned aerial vehicles. The first edition of the Lab to Market initiative was launched to boost industry academia collaborations. Under the National Supercomputer Mission, 4 new supercomputers have been installed. New technology, new treat municipal sewerage and highly polluted industrial waste water stream. Several indigenous smart low-cost technologies to alternate energy sector with a focused effort of the Northeast Center for Technology Application and Research, Cultivation and Saffron was successfully in South Sikkim. It is being expanded to Arunachal Pradesh and Meghalaya soon. There are the great examples of some of the progress we made. At the same time, the scientific community would remind us that we have miles to go before we sleep. Therefore, let us embark in this journey together. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के कार्यक्रम हमारे युवा वैज्ञानिकों को भी एक नया दिशा आपके द्वारा मिलेगा। आने वाले 25 साल में देश के नौजवान विज्ञान के फील्ड में क्या करना चाहिए, जो 75 सेंटर्स में इस आजाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में जो कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं, उसके द्वारा देश के नए पीढ़ी को एक नया उत्साह, नया रास्ता आप लोगों के द्वारा मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और दिस इज माई लैंड, दिस इज माई मदरलैंड, दिस इज आवर लैंड, दिस इज अ ग्रेट लैंड, दिस लैंड ऑफ ट्रेडिशन एंड ग्रेट कल्चर, वी हैव ग्रेट हिस्ट्री। इतनी ही बात करते हुए मैं एक नया प्रेरणा आप लोगों से लेते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपकी प्रेरणा के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए, और विशेष रूप से युवाओं के लिए, जो आपने कहा है कि आने वाले 25 वर्ष, जब 2047 में हम भारत की आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएं, तब तक विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान की दृष्टि से युवाओं को किस प्रकार से योगदान करना है, उसके लिए आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करेंगे निदेशक विज्ञान प्रसार, भारत सरकार, आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी को। Namaskar and respected dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, thank you so much
for having come here, graced the occasion, and have boosted our morale in organizing this event, Vigyan Sarvatra Pujyate. This program was conceptualized practically close to 10th of January when PSSR had the confidence in us to organize this program. We were told this is something that should be at par with other ministries that are trying to do this every week. As a result, based on our experience at Vigyan Prasar for past 32 years, the kind of relationship that we have built with our partners all across the country, and efforts that we have made in the direction of bringing in Indian languages into the fold. This came in handy. With one call, I feel very touched, moved, and inspired to tell you that everybody around all over the country at 75 locations stood up and said, yes, we'll be there with you and we'll organize this with great grandeur the way we wanted to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav. In this regard, I really want to thank all members of the organizing committee, which includes the Office of the PSA, Office of the Secretary, Ministry of Culture, and of course, all those departments, particularly CSIR, DST, DBT, MOES, Defense, ICMR, AICT, IGNU, everybody, they also came forward, supported us, and gave us that power that we could stand here and then take it forward. I know we've got a lot of things to do, and in this whole course, at the very outset, I seek an apology in case if we make any mistake or if we have left somebody or might have offended somebody. So from the core of my heart, I apologize for that. But I also, on the hand, seek your blessings and support, because this is all about the country. This is all about Rashtriyata, our Bharat. With this, I once again thank all of you for having joined us for this inaugural function, and I hope next 7 days will be a moment where we'll really enjoy and cherish science and technology. And please don't forget to join us on day 4th, which is the Science Lit, where we have a lot of cultural activities happening all over the country. And out here, once again, I request you all to please visit Jawaharlal Nehru Stadium, where we have the Mega Expo, and also the National Science Book Fair. Book fairs for the last many days have been postponed because of COVID, but now we have gotten them there. So please join us. And once again, thank you once again for being with us today and helping us build this. We look forward to all of you during this 7 days. Thanks once again. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू डॉक्टर नकुल पराशर सर फॉर वर्ड ऑफ थैंक्स। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, कृपया अपने अपने स्थान पर आप सब लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि अब राष्ट्रगान होगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज From इतना सारा I became this सारा। मेरे अपने reasons थे, you'll have yours। That's Dr. Rash। जब खुद बनी patient, realized कि करना होगा health के साथ।
An apple a day, even doctors की. Reason चाहे जो भी हो, सब करेंगे try. Because it's time to healthify. जो ब्लैक कलर के कंक्रीट होते हैं टेम्परेचर को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा अवशोषित करते हैं. तो ऐसे कंक्रीट हो जो कि सूर्य की ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर दें, तो जब अवशोषण नहीं करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. ठीक है. उसके अलावा हरित छतों का निर्माण आपने देखा होगा, बहुत से छतों पर क्या किया जाता है, प्लांट लगा दिए जाते हैं, बेल लगा दी जाती हैं, लताएं लगा दी जाती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए. सड़क का जो रंग है हल्का रखना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ और ग्रीन बेल्ट का उपयोग करना चाहिए. जलाशयों और झीलों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए. अगर ऐसा करते हैं तो उष्माद्वीप के प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलो अभी कुछ बचा हुआ है लेकिन इसको हम आगे यूज करेंगे. ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सूचना सुनते हुए जाइए. सबसे पहली बात यह है कि एनसीईआरटी का जो बैच है वह चल रहा है, वह स्टार्ट हो चुका है 9 बजे. ठीक है, कहां पर हो रहा है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर हो रहा है. अब आप इस ऐप पर जाके खोजने में आपको दिक्कत होगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए. और टेलीग्राम चैनल पर कैसे जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसका नाम है सुनील वर्मा अन अकेडमी. इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. मैं अभी कुछ ही देर में आपको अपनी एनसीईआरटी कोर्स का क्या करूंगा, लिंक डालूंगा. आप उस पर क्लिक करके निःशुल्क आकर क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो. आपको कोई यहाँ पेमेंट नहीं करना है. अगर कहीं पर भी कोई भी रेफरल कोड ऐप के दौरान मांगता है, कोर्स के दौरान, आप ये कोड यूज कर दीजिएगा. आप यह जो बैच है इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं एसबी लाइव कोड यूज करके, और आपको क्या होगा, इससे आप मुझसे जुड़ जाएंगे. इसके अलावा स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए. द हिंदू की प्रैक्टिस क्यूज चलाई जाती है, यूपीएससी सेट का प्रैक्टिस है, इसमें पार्टिसिपेट करिए. आपके सामने कुछ बैच हैं, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं. आप यहां तक जुड़े रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू. एक बच्चों इंफॉर्मेशन, लास्ट इंफॉर्मेशन बता दूं आपको कि अभी जो है कि मैं एक एमसीक्यू का वीडियो 5:30 बजे आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें हम क्या करते हैं, आईएएस के लिए महत्वपूर्ण जो है कि कुछ एमसीक्यू को मैं आपके सामने लेकर आता हूं, उसको सॉल्व करते हैं. तो आप यहीं इसी चैनल पर आप क्या करेंगे, 5:30 बजे फिर से मुझसे जुड़िए, हम लोग कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं. चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.